Pragmatics, chapter number 9 by George Yule. So, pragmatics are actually the study of the invisible meanings that are being discussed, or you can say that are hidden under some words or some context or something like that. So, pragmatics actually deals with the hidden meanings. The study of the hidden meanings are known as pragmatics, which are also called the associated meanings. So, associated meanings have two type of context. The physical context and the linguistic context. Context actually is कि हम किस context में बात कर रहे हैं, क्या चीज़ डिस्कस हो रही है, क्या background चल रहा है, that is all the stuff dealt with the context. So, context हमारे पास दो तरह का होता है. The one is the physical context and the other one is the linguistic context. फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास टाइम, प्लेस, सिचुएशन, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं. वाइल इन द लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट हमें सामने वाले की बात को सुन के उसके वर्ड्स को ऑब्जर्व करके ये आइडेंटिफाई करना होता है, ये फाइनलाइज करना होता है कि हमारे सामने वाले के साथ कॉन्वर्सेशन का या उसकी बात का मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कहता है कि लेट्स पैक अ बैग, ईटेबल्स एंड अम्ब्रेला एंड गो टू द बैंक, तो आपको कोई बोल रहा है कि आप एक बैग पैक करें, आप अपने साथ अपनी जो ईटेबल्स हैं वो पैक करें, अपना अम्ब्रेला पैक करें और हम बैंक चलते हैं. अब ऑब्वियसली वो बंदा आपको अम्ब्रेला, ईटेबल्स और बिस्किट्स पैक करके बैंक, फाइनेंशियल बैंक तो जाने का कहेगा नहीं. वो आपको बैंक ऑफ द रिवर का बोल रहा है कि जो हमारे पास बेसिक चीज़ है कि हमने ये चीज़ कहाँ से जज की कि वो हमें बैंक ऑफ द रिवर का बोल रहा है, नॉट द फाइनेंशियल बैंक, उसके लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट से. लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि उसकी बात से, उसके बात करने के स्टाइल से हमने ये चीज़ जज की, ऑब्जर्व की कि वो बंदा जो है वो हमें फाइनेंशियल बैंक जाने का नहीं, वो हमें जो है वो दूसरे बैंक जाने की बात कर रहा है. फिजिकल कॉन्टेक्स्ट इज़ द टाइम, प्लेस, सिचुएशन, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स. अब एक दीवार पे आपको बैंक लिखा नज़र आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको यही पता है कि उस बैंक का मतलब फाइनेंशियल बैंक ही है. अब एक जंगला है, उसके ऊपर आपको बैंक लिखा नज़र आ रहा है, पीछे आपको जंगले के पीछे नज़र आ रहा है समंदर है पूरा, तो यू विल बी एबल टू इंटरप्रेट कि ये जो है ये फाइनेंशियल बैंक नहीं, ये बैंक ऑफ द रिवर है. हमें कैसे पता चला कि वो फाइनेंशियल बैंक है या बैंक ऑफ द रिवर है? उसके फिजिकल कॉन्टेक्स्ट से. So this is what context means. We have two kind of context: physical context and the linguistic context. And these are how they deals with something. Pragmatics deal with the invisible meanings. Invisible meanings as in the meanings that are not visible easily. Signboards, heated attendant parking. Now this is the thing written on a signboard at the area of parking. Heated attendant parking. अब आपको एक स्टेटमेंट दी गई है हीटेड अटेंडेंट पार्किंग. क्या मतलब, कहाँ दी गई है? आपको गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह पे बोला जा रहा है कि हीटेड अटेंडेंट पार्किंग, कि ये आपके हीटेड अटेंडेंट्स को पार्क करने की जगह है, यानी आपकी जो हैं हीटेड कार्स हैं उनको पार्क करने की जगह है ये. सो इट गिव्स अस अ पार्किंग फॉर हीटेड व्हीकल्स. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि Pragmatics says that physical and the hidden meanings, in order to understand, we have to look at, you can say, physical context and the linguistic context. Physical context we already discussed, depend upon the surroundings, and linguistic context depends upon the conversation that may give you a hint about something. So next we have the dixes. Dixes are actually of four types that we have discussed about. Dixes are actually the expressions, we can say, we add to our conversations or something like that. So dixes are the expressions, and dixes are of three types: the personal dixes, the spatial dixes, and the temporal dixes. Personal dixes are the dixes that demonstrate a personality, you can say a person. For example, I, we, he, she, it. These all are the personal dixes. Why? Because they are referring to a person. Up to some extent they are referring to a person. He is a person, she is a person, I am a person. So personal dixes वो हैं जो किसी person को refer करते हैं. Spatial dixes, कोई भी place या position से related जो dixes होंगे, that are called the spatial dixes. For example, here, there, beside, in front, etc. टेम्पोरल डिक्सेस, येस्टरडे, टुडे, टुनाइट, ये सारे टेम्पोरल डिक्सेस यानी कि रिलेटेड टू टाइम हैं.
Okay. Next we have reference. We already discussed it in very detail कि reference क्या है कि whenever we have to give some kind of reference, some kind of links or connections for explaining a person to understand some context or something like that, then we are giving actually the reference. In short, when we are talking out of a context, then we have to give some examples to that person, and these examples given to this person are called the references. Okay, next we have, again this all is the same thing. You can say the summary of the thing that semantics have two aspects, language and outside the language. Outside the language we have context. Context is of two types: the dixes, the personal, spatial, temporal dixes, the references, and the inferences. Inferences are the things that are that are done by the listeners, or you can say how a person infers something. You can say the background knowledge. Okay, now we have the speech acts. Speech acts are of basically two types: the direct speech act or the indirect speech act. Speech act means the acts you perform by speech. For example, promise, order, compliment. All these are the speech acts. So there are two types of speech acts: the direct speech act and the indirect speech act. The direct speech act are the ones जहाँ पे आपको कोई भी सामने वाले की liking या disliking मैटर ही नहीं करती, ठीक है. You do not try to save your face. You do not try to you can say save the relationship or something like that. ये होती है direct speech. For example, if I say a person go shut the door, उसको पसंद है, उसको नहीं पसंद, आई गिव इट डैम, उसको उठना पड़ेगा, उसको जाके डोर क्लोज करना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज आई हैव द अथॉरिटी एंड आई एम सेइंग हिम टू शट द डोर. और उसके पास राइट नहीं है कि वो मुझे आगे से मना करे कि नो आई एम नॉट गोइंग टू शट द डोर. और इनडायरेक्ट स्पीच जहाँ होती है वहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं कि आप अपना फेस सेव करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम यू कैन से फेस सेविंग एक्ट भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस सेविंग एक्ट, ठीक है. अब यहाँ पे ये जो डायरेक्ट फेस था दैट इज कॉल्ड द फेस थ्रेटनिंग एक्ट. अब ये जहाँ पे हम फेस सेव करने की कोशिश करते हैं दिस इज कॉल्ड द फेस सेविंग एक्ट. यानी कि हमें फ़र्क पड़ता है कि व्हाट द सेकंड पर्सन थिंक्स अबाउट अस, हम अपना पॉजिटिव इमेज शो कराना चाहते हैं. दिस इज कॉल्ड द फेस सेविंग एक्ट. अब आपका जो सोशल इमेज है दैट इज़ योर फेस एक्चुअली. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव एनाफोरा एंड कैटाफोरा. अब एनाफोरा और कैटाफोरा क्या है? एनाफोरा और कैटाफोरा बेसिकली हमारे पास होते हैं रेफरिंग बैक, कि किसी चीज़ को रेफ़र करना वापस है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई सेड अली इज़ अ गुड बॉय, देन आई से ही स्टेज इन लाहौर, ठीक है. अब ये जो ही है दिस इज़ अलीज़ एनाफोरा, कि मैंने अली को रेफ़र किया, बाद में रेफ़र किया. फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज़ द एक्चुअल आइडेंटिटी ऑफ अली. पहले मैंने ही नहीं यूज़ किया, पहले मैंने उसका डायरेक्ट इंट्रोडक्शन दिया, देन मैंने उसके लिए कोई प्रोनाउन, कोई मतलब कि यू कैन से कोई पर्सनल डिक्सेस यूज़ किए, ठीक है. अ पपी, द पपी, इट. फॉर एग्जाम्पल, आई से अ पपी इज़ प्लेइंग आउट. Then I say the puppy is white. Then I say it has a tail. It and this the refers to the same puppy. कि ये इट और द जो हैं ये सेम पपी को ही डिस्कस कर रहे हैं. लेकिन पहले हमने क्या किया, पहले हमने डायरेक्ट इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद हमने प्रोनाउंस दिए, उसके बाद हमने प्रोनाउंस यूज़ किए जो कि एनाफोरा कहलाते हैं. कि पहले आप कोई डायरेक्ट इंट्रोडक्शन देने के बाद, डायरेक्ट इंट्रो, उसके बाद आप डिक्सेस देते हो. लेकिन कैटाफोरा में हमारे पास क्या होता है कि पहले हम एनोनिमस रेफरेंस देते हैं, फिर हम डायरेक्ट इंट्रोडक्शन देते हैं. फॉर एग्जांपल, ही इज़ अ गुड बॉय, हिज नेम इज़ अली. सो हमने यहाँ पे क्या किया कि पहले हमने इनडायरेक्ट मतलब कि एनोनिमस रेफरेंस दिया, ही इज़ अ गुड बॉय, देन हमने उसका नाम बताया. सो दिस इज़ व्हाट कैटाफोरा डील्स विथ. So, this is all about Cataphora, Anaphora and Pragmatics chapter number 9.
I hope you find this video useful, and if you found this video useful, just share it with your friends so that they can get the same information as you got from this video. Thank you for watching.